करते हैं। हेलो एवरीवन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो ट्रैकोमैटिस पैनस में क्या मिलता है? सो वैस्कुलराइजेशन हो जाता है। कहाँ का? अपर हाफ का हो जा रहा है। यहाँ पे देख रहे वैस्कुलराइजेशन हो रहा है। पहले पेरिफेरी अपर से आ करके फिर देन वो कॉर्निया में भी चल जा रहा है। सेंटर को इन्वॉल्व कर रहा है, होल कॉर्निया को। देन हम लोग देख सकते हैं कि हेजीनेस हो रहा है यहाँ पे। एंड फिर हम लोग देख सकते हैं अपर पार्ट ऑफ द कॉर्निया में हेजीनेस हो रहा है। एंड हम हर्बर्ट पिट देखने को मिलेगा। देन ग्रैन्युलेशन टिश्यू भी कॉर्निया में देखने को मिलेगा। वैस्कुलराइज एंड ओपेक हो जा रहा है। नाउ लेट्स सी प्रोग्रेसिव पैनस क्या होता है। जो वेसल्स है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, जैसे हम लोग देख सकते हैं। ये प्रोग्रेसिव पैनस पैलेस में होता है। इन्फिल्ट्रेशन एंड हेज देखने को मिलेगा। रिग्रेसिव पैनस क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन शोज एविडेंस ऑफ रिसीडिंग so that the vessels extending short distance beyond the area which is infiltrated and hazy. This difference is useful in estimating the result of the treatment. Corneal ulcer, which may be chronic, occur anywhere but are commonest at the advancing edge of the panels. एडवांसिंग एज जो होता है, एज ऑफ द पैनस, इसमें हमें कॉर्डियल अल्सर देखने को मिलता है। बट आर कॉमनेस्ट एट एडवांसिंग एज ऑफ द पैनल। दे आर शैलो, लिटिल infiltrated and causes much lacrimation and photophobia. The panas may resolve completely, leaving the cornea quite clear. ये जो पैनस है, ये पूरी तरीके से रिजॉल्व हो सकता है कॉर्निया को क्लियर छोड़ करके, अपार्ट फ्रॉम द ऑब्लिटरेटेड वेसल इफ ट्रीटेड अर्ली। When the panus has not destroyed Bowman's membrane, in other cases permanent opacity results. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि पैनस जब अर्ली स्टेज में, तो इसको रिजॉल्व करवा करके ठीक किया जा सकता है। बट जब बोविन्स मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो गया है, तो ये परमानेंटली डैमेज हो जा रहा है ट्रैकोमा की वजह से। ना कोर्स एंड प्रोग्रेशन क्या है? सो इट्स कोर्स इज डिटरमाइंड लार्जली बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ complicated secondary bacterial infection, unrepeated reinfection transmitted by flies and infected relatives. In the absence of such complication, a pure trachoma may be relatively mild, symptomless disease, so as to excite little or no attention until perhaps cicatrization manifests itself later in life. In such cases, the discovery of follicles or other cicatrization remnant on the upper tarsal conjunctiva, when the lid is averted, may come as surprise to the patient and his relatives. On the other hand, in many countries where the disease is endemic, secondary infections such as Haemophilus aegypticus, gonococci,
and other organisms results in acute and incapacitating condition liable to relapse as a result of reinfection and leading to gross cicatrization sequelae, which often leads to blindness. The sequelae क्या है? Apart from the result of pannus and corneal ulcer, the most disabling effect of trachoma are caused by disorientation of the lids. A mechanical drooping of the upper eyelid owing to the dense infiltration is very characteristic. Trachomatosis. There is always some scarring, and when extensive, alters the shape of the lid, especially the upper lid. A change aided by the infiltration of the tarsus, causing softening and later alteration in the fibrous tissue. By later contraction of the newly formed scar, the lid margins may be turned inward. एंट्रोपियन हो जाएगा. क्या हो रहा है? सो पैनस हो रहा है, कॉर्नियल अल्सर हो रहा है, डिस्टॉर्शन ऑफ द लिड हो जाएगा. कैसे? पहले ड्रूपिंग ऑफ द अपर लिड होगा, टोसिस होगा, कुछ स्कारिंग होगा, जो कि लिड का शेप अल्टर कर देगा, अपर लिड का. सॉफ्ट एंड अल्टर्ड फाइब्रस टिश्यू हो जाएगा, बाद में कॉन्ट्रैक्ट करेगा न्यूली फॉर्म्ड स्कार टिश्यू, तो लिड मार्जिन जो है वो अंदर की तरफ एंट्रोपियन हो जाएगा, कॉजिंग द लैशेस to rub against cornea, often with a disastrous effect. ट्राइकियासिस हो जाता है. In late stages, the tarsal plate may also become thickened. Tylosis. These gross changes, however, rarely occur unless complicated infections have played a major part in the illness. Now, diagnosis क्या होता है? So, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सिंप्लीफाइड माइक्रो इम्यूनोफ्लोरेसेंट माइक्रो IF टेस्ट using pooled antigens rather than individual trachoma inclusion conjunctivitis serotype has been developed, which is recommended for routine diagnostic use. Culture of chlamydia trachomatis is irradiated. McCoy's cell is an expensive test and is no longer used. Monoclonal antibody direct test. So IgA IPA light microscopy tests from the best combination of diagnostic tool. कल्चर बोल रहा है, माइक्रो इम्यूनोफ्लोरेसेंट बोल रहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोल रहा है. Medial disease. From the clinical point of view, the diagnostic feature of trachoma depends upon the following characteristics: the presence of follicle more in the upper than in the lower palpebral conjunctiva, Epi- epithelial keratitis in the early stage, most marked in the upper part of the cornea, a pannus in the upper part of the cornea, limbal follicles or their sequelae as Herbert pits,
In later stages, typically stellate trachoma, scarring of the conjunctiva with its linear conjunctival scarring of the upper tarsal. Depending upon the stage of the disease, at least two of these signs should be present to establish the diagnosis. It is confirmed by histological demonstration of inclusion body. Inclusion conjunctivitis can be excluded by culture of organism. As initially suggested by McCallum, an English or ophthalmologist who studied trachoma extensively in Egypt, the disease is frequently designed as occurring in four stages. चार स्टेज है क्या? ट्रैकोमा स्टेज वन designated designates the earliest stage of the disease before clinical symptoms are obvious. This stage includes signs of immature follicles present on the superior tarsus and mild superficial punctate keratopathy and maybe a pannus. Then we have trachoma stage 2 includes the period between the appearance of a typical trachomatous lesion and the development of a scar tissue. This stage is characterized by a florid superior tarsal follicular reaction with mature follicles 2A or markedly papillary hyperplasia 2B with pannus formation, limbal follicles and superior corneal subepithelial infiltrates. Now we have got trachoma stage 3. टू में क्या था? टिपिकल ट्रैकोमैटस लीशन होगा, स्कार टिश्यू होगा, 2A 2B है, 2A में मेच्योर फॉलिकल्स होगा, 2B में पैपिलरी हाइपरप्लेशिया होता है ना। ट्रैकोमा का स्टेज 3 क्या है? ट्रैकोमा के स्टेज 1 में एज लीशन फॉर्म नहीं हुआ था, बस फॉलिकल्स दिखेगा इन टू द सुपीरियर टार्सस। और क्या हुआ था? पंटेट केराटोपैथी होगा, एक पैनस हो सकता है। स्टेज 2 में टिपिकल ट्रकोमाटस लीजन होगा, स्कार टिश्यू फॉर्म होगा, 2A में मैच्योर फॉलिकल होगा, 2B में पैपिलरी हाइपरप्लेशिया होगा। नाउ वी हैव ट्रैकोमा स्टेज 3 in which scarring is obvious along with the presence of follicles indicates the persisting active infection. Now we have trachoma stage 4 in which there is marked scarring of the upper tarsus when the cure appears to have been effected, but the disease has become quite so that there are no follicles. However, cicatrization give rise to symptoms. Later complications include severe dry eye, trichiasis, entropion, keratitis, corneal scarring, superior fibrovascular pannus, Herbert pits, scarring limbal follicles, corneal bacterial superinfection and ulceration. ये सब होता है स्टेज 4 में. The WHO has suggested an alternative classification which is summarized in table 11.3. So जो WHO का क्लासिफिकेशन है उसका नाम है फिस्टो. फिस्टो क्यों? फर्स्ट इज TF. TF इज ट्रैकोमैटस फॉलिकल्स. सो फर्स्ट में क्या होता है? फॉलिकल्स इम्प्लाइज एक्टिव डिजीज विच नीड्स ट्रीटमेंट. नाउ
Trachomatis inflammation follicular. 5 or more follicles of at least 0.5 mm diameter on the upper tarsal plate should be present. क्या बोल रहा है? 5 या 5 से ज़्यादा फॉलिकल्स 0.5 mm डायमीटर का प्रेजेंट होना चाहिए. कुछ पैपिले भी प्रेजेंट हो सकता है एडिशनली, पर पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा में ब्लड वेसल दिखना चाहिए. ये स्टेज इम्प्लाई करता है कि पेशेंट अगर ठीक से ट्रीट हो गया तो उसको रिकवर हो जाएगा और कोई स्कारिंग नहीं होगा और मिनिमम स्कारिंग होगा. या फिर ये था TF ट्रैकोमैटिस फॉलिकल्स. नाउ वी हैव फिस्टो में वी हैव FI. तो ट्रैकोमैटिस इंटेंस में क्या है? सीवियर डिजीज which needs urgent treatment. So trachomatis inflammation intense. The follicles are palpable. So then moving ahead, we have trachomatis inflammation intense.